Okay, so दिस इज द सिलेबस। अब आप देखिए इसमें यूनिट 1-2 जो है वो क्या कह रहा है। यूनिट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है। कोई फॉरेन स्टूडेंट है क्या? आपके बैच में नहीं है ना? है ही नहीं? ठीक है, ओके। प्रोटोकॉल क्या-क्या होते हैं वेब में जो यूज़ होते हैं, ठीक है? जो वेब को गवर्न करते हैं रादर। सिंटैक्स ऑफ यूआरएल, यूआरएल क्या चीज़ होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर आप फ़ैमिलियर हैं तो अच्छी बात है, नहीं फ़ैमिलियर हैं तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो ज़्यादातर इसमें है, जैसे इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ इन इंडिया, ये मोस्टली यू विल सी देयर आर डेफिनिशंस, देयर आर थ्योरीज, देयर आर कांसेप्ट्स, ठीक है? ऑल्दो दे आर ऑफ़न आस्क्ड इन द इंटरव्यूज़, ठीक है? सिमिलरली यूनिट 2 में आइए, इंटरनेट एप्लीकेशंस। इसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिख रहा है, एफटीपी, टेलनेट, ईमेल, है ना? चैट, इंटरनेट एड्रेसिंग कैसे होती है, कैसे डोमेन नेम आईपी एड्रेस से मैप होता है, तमाम चीज़ें। डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सर्वर, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी मोर और लेस ऐसी चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल लेवल पर हैं और थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है? जो प्रैक्टिकल पार्ट आपका शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। फॉर्मेटिंग वेब पेजेस से शुरू हो रहा है, जिसमें आप एचटीएमएल पढ़ते हैं, ठीक है? एक्सएमएल पढ़ते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल मतलब एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँगा क्या होता है, ठीक है? अब फिर सीएसएस भी हम देखेंगे, हाँ, स्टाइल शीट्स। देन फिर उसके बाद एचटीएमएल के बारे में और डिटेल्स है कि कैसे आप टैग्स बनाएँगे, क्या टैग्स यूज़ करेंगे आप, टेबल्स कैसे बनाएँगे, फॉर्म क्या होता है, एचटीएमएल फॉर्म क्या होता है, सीएसएस को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ, यूनिट 3 से यूनिट 4 तक। यूनिट 4 में बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे आपका फोकस है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली आपका वो पार्ट है जिस पे आपका लैब बेस्ड होगा, ठीक है? जो प्रैक्टिकली सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद अगर लास्ट सेक्शन देखिए, तो लास्ट सेक्शन तो ई-कॉमर्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, प्योरली थ्योरी है, ठीक है? कि ई-कॉमर्स क्या होता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या-क्या उसमें आते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है? ये तमाम चीज़ें जो वर्चुअल रियलिटी कैसे यूज़ करते हैं ई-कॉमर्स में, तमाम चीज़ें। तो ये तो बेसिकली प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है? फायरवॉल डिज़ाइन इश्यू, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया जा सकता है, अदरवाइज़ फायरवॉल डिज़ाइन इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी वास्ट टॉपिक, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी इसके बारे में सब कुछ बता ही दूँगा, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग कि होता क्या है फायरवॉल और कैसे क्या इश्यूज़ उसमें आते हैं डिज़ाइन में, ये समझने की बात है खाली। तो ये भी अगेन इट्स अ मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, ठीक है? तो जो हम क्लासेस करेंगे ना, क्लासेस ऐसे करेंगे जिसमें अ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले यूनिट 1 से शुरू करूँ और पूरा आपको ये पढ़ा दूँ, फिर यूनिट 2 पूरा पढ़ा दूँ, फिर यूनिट 3 पे आऊँ। यूनिट 2 के कुछ टॉपिक पढ़ाते-पढ़ाते साथ में जो चीज़ें आएँगी बीच में, हो सकता है मैं यूनिट 3 पे आ जाऊँ, ठीक है? कुछ चीज़ें हो सकता है मैं यूनिट 4 पे आ जाऊँ, ताकि आप लैब भी साथ-साथ नेक्स्ट वीक से शुरू कर सकें, ठीक है? तो अक्सर ऐसा होगा कि आपका मिक्स होती रहेंगी चीज़ें, और सिलेबस भी कुछ तरह से है कि मतलब एक अगर ऑर्डर में पढ़ाना शुरू करें तो फिर आपका लैब शायद मिड ऑफ द सेशन शुरू होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं अरेंज करूँगा चीज़ को, ठीक है? नॉर्मली मैंने कभी भी नोट्स स्टूडेंट्स को नहीं देने के फ़ेवर में होता हूँ, ख़ासतौर से जो ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतनी इतनी तो इंटरनेट में वाइड रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी होती है कि आप कर लेते हैं। बट बिकॉज़ दिस इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो मैं साथ-साथ नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ और ये नोट्स आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? कई बार मैं इससे भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? सो क्या कह रहा है? दिस इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? यूज़ फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट?
इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, वेब पेज पे आप देखते हैं ना, क्या होता है कि आप आपकी किसी पोजीशन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं पे इनपुट बॉक्स बना हुआ है, नीचे सबमिट बटन है, कैंसिल बटन है, तो एक एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कोई टेबल इन्फॉर्मेशन तो टेबल में प्रॉपर्ली अरेंज होकर के मिल रही है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए वेब पेज को यूज़ करते हैं आप। Format text, images and other contents and is used to create the layout and design of the web pages। ठीक है, तो लेआउट मतलब क्या होता है? आप कई बार देखेंगे वेब पेज में इधर के बार में आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ और आ रही है, ऊपर आपके मेनू आप मतलब जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, हाँ, वो सब आ रहे हैं, ठीक है? बीच में कंटेंट है, ठीक है? कंटेंट भी फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड हो सकता है, तो जो इस सब चीज़ को क्या बोलते हैं हम? लेआउट बोलते हैं इसको, ठीक है? प्रॉपर्ली ये लेआउट पे डिज़ाइन करना, ठीक है? और किसी भी एचटीएमएल पेज को जो भी ऑनलाइन वेब पर है, उसको रिफ़र कैसे आप करते हैं? एक एड्रेस से, ठीक है? और वो एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? यूआरएल, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना? So this is a standard way to specify the location of a web resource such as a web page or image, ठीक है? Or even a PDF document, ठीक है? URLs are used to request web pages from servers, ये बात ध्यान दीजिए, URLs are used to request web pages from servers, ठीक है? आप जिस मशीन पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करके कुछ यूआरएल टाइप करते हैं, तो दैट इज़ अ क्लाइंट मशीन, ठीक है? और जो क्लाइंट है वो क्या है? ब्राउज़र है, ठीक है? अब ये रिक्वेस्ट जाएगी किसी रिमोट एक्सटर्नल मशीन के पास जिसमें एक सर्वर हार्डवेयर है और सर्वर सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उस सर्वर हार्डवेयर के ऊपर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और जिस वेब पेज के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यानी यूआरएल जो डाल रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ अ काइंड ऑफ अ एड्रेस कंटेनिंग द machine as well as the resource which you are looking for. Let it be the resource be a HTML page or a resource like a PDF document or whatever or audio video file whatever, ठीक है? तो जिस चीज़ के लिए आप एड्रेस डाल रहे हैं, ठीक है? उसको डालेंगे आप यूआरएल के फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं यूआरएल बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और उसको यूज़ करके क्या होता है एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास और सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्व करके एक रिस्पॉन्स भेजता है आपके पास, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो हमने समझा एक होता है HTML, इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो व्हाट इज दिस मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप का मतलब क्या होता है? एनीवन? टैग्स समझते हैं ना, टैग्स? अच्छा, HTML देखा है किसी ने? किस तरह का होता है? HTML पेज कोई देखा है आपने? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई, हाँ, कोई मैं एक HTML पेज खोल दूं आपके लिए, जस्ट ओपन वन, जामिया हमदर्द की साइट है, राइट? इसको राइट क्लिक करिए और देखिए व्यू पेज सोर्स, ठीक है? हाँ, ये क्या दिख रहा है आपको? HTML टैग से शुरू हो रहा है, ठीक है? उसके अंदर फिर एक नेस्टेड टैग है, हेड है, ठीक है? फिर हेड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर कुछ स्टाइल है, ठीक है? दिस इज स्टाइल के अंदर जो कुछ आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ CSS स्टाइल, ठीक है? पर्पस आगे देखेंगे हम एग्जांपल से, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। फिर आप देखिए हेड क्लोज हो रहा है, यानी हेडर पार्ट जो आपका क्लोज हो रहा है, फिर एक्चुअली बॉडी शुरू हो रही है जिसके अंदर आपका एक्चुअल कंटेंट होता है जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है? बॉडी में देखिए जैसे आपको एक यूआरएल दिख रहा है कि जामिया हमदर्द डॉट ए सी डॉट इन, इसका इसका जो ये टारगेट एड्रेस है, HREF, यानी ये पेज पे जहाँ पे, हाँ,
तो ये इसका एड्रेस हो गया। फिर इसमें आपको दिख रहा है कि और भी लिंक्स हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स है, फिर चेंज पासवर्ड है, नोटिस सर्कुलर इंडेक्स है, ये तमाम चीज़ें। आप इस पेज पे देखें, ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं इस पे दिखेंगी। ठीक है, नोटिस वगैरह दिख रहा है ना आपको? तो ये सब चीज़ सब एज़ अ हाइपरलिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? तो ये जो कोड है, दिस कोड इज़ रिटन एज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? और इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है, जैसे ये लिंक है, ये लिंक आपको दूसरे पेज पे नेविगेट करके ले जाता है। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एज़ अ हाइपरटेक्स्ट। ठीक है? आप एक पेज पे हैं, यहाँ से आपने कहा कि भई मुझे दूसरे पेज पे आपने क्लिक करा, एक लिंक पे क्लिक करा, वो आपको दूसरे पेज पे यानी दूसरे रिसोर्स पे ले गया। ये देखिए आपका एड्रेस चेंज हो रहा है। नाउ दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड एज़ अ यूआरएल। दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड एज़ अ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है? So now we know that what is a hypertext, ठीक है, and why HTML is called as hypertext markup language, right? Now एक टर्म का आप डिफरेंस बताइए। सुना होगा आपने वेबसाइट और एक सुना होगा वेब एप्लीकेशन। दोनों में डिफरेंस बता सकता है कोई? एक स्टैटिक, ये कहना चाह रहे हो स्टैटिक। जो तुम सही कह रहे हो, बोलो बोलो, शायद तुम ठीक से बता नहीं पा रहे हो, फिर से बोलो क्या बोल रहे थे। अच्छा, पहले से मौजूद होता है ना? और वेब एप्लीकेशन में क्या होता है? देखो, सबसे पहले जब कंसेप्ट शुरू हुआ था तो उसको लोग वेबसाइट ही कहते थे। ठीक है? वेबसाइट मतलब क्या होता था कि तब वेब एप्लीकेशन पिक्चर में नहीं था। तो जैसे किसी को अपना अपना कोई बिज़नेस किसी ने शुरू करा, ठीक है? बिज़नेस पे उसने एक वेबसाइट डेवलप करना चाहा जो कि सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। यानी होम पेज पे जाएगा तो वो बताएगा क्या-क्या आपके से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वो शॉप खोली है, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें वो बेच रहे हैं, उनकी इमेजेस होंगी, ठीक है? उनके प्राइसेज़ वगैरह होंगे, ठीक है? आप फ़ोन करके किस एड्रेस पे उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है। या ईमेल आईडी दिया हो, जिस ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें आप फॉर्म फिल अप करके रिक्वेस्ट को सर्व कर सकें, यानी रिक्वेस्ट डाल सकें, ऑर्डर को डाल सकें अपना और ऑर्डर का वो एक्नॉलेजमेंट आपको दे सके। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ रहेगा वो सारे पेजेज़ में ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो स्टैटिक है, ठीक है? स्टैटिक। तो वेबसाइट का मतलब उसमें सारे पेजेज़ जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। कुछ इस चीज़ को हम स्टैटिक कहते हैं तो क्या बोलते हैं, वो ठहरा हुआ है, राइट? ठीक है? इसका मतलब कि उसमें चाहे मैं उसको चेक करूँ या ये खोल के उस एड्रेस को डाल के चेक करें या ये करें, कोई भी करें, उनको सेम पेज दिखने वाला है, ठीक है? अलग-अलग पेज नहीं दिखेगा। चाहे वो अलग-अलग बंदा चेक करे, चाहे अलग-अलग टाइम पे उसको रिक्वेस्ट किया जाए उस पेज को, ठीक है? या अलग-अलग लोकेशन से रिक्वेस्ट किया जाए, ठीक है? सबको सेम इन्फॉर्मेशन दिखने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जीमेल का लॉगिन पेज करें, तो लॉगिन पेज पे आपको क्या दिखता है? ईमेल एंड पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट? नीचे सबमिट बटन होगा या हाँ, आपका जो आपको ले जाएगा इनबॉक्स पे, राइट? क्लिक करने पर। तो जो पहला पेज आपको दिख रहा है, वो हम में से कोई भी अगर उसका एड्रेस सिर्फ़ gmail.com अगर करेगा, तो या gmail.co.in करेगा इंडिया के हिसाब से, तो क्या होगा एड्रेस बार में क्या चीज़ होगा? gmail.co.in/index.html। अगर आप यूआरएल को आप नोटिस करें तो index.html लिख के आता है। Now this index.html is the default page, the default page। नॉर्मली ये ऑलमोस्ट सारे ही सर्वर्स के लिए डिफ़ॉल्ट पेज होता है कि अगर आपने कोई रिसोर्स का नाम नहीं दिया, आपने सिर्फ़ कहा gmail.co.in इतना, तो वो समझ जाएगा कि इस gmail.co.in जो चीज़ है, ये एड्रेस है किसी एक सर्वर का, मतलब फ़िज़िकल सर्वर से मैप्ड है। नाउ उस फ़िज़िकल सर्वर से पे जब पहुँचेगा, तो किस रिसोर्स को आप किस पेज को आप
रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने आप उसने अपेंड कर दिया index.html। सबसे पहले आपको दिखा index.html, दैट इज द लॉगिन पेज। अगर आप एड्रेस पे चेंज करेंगे तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे जाएगा फिर, अगर आप टाइप करते हैं तो। जैसे आपने index.html नहीं दिया, उसके आगे आपने डाला फॉर एग्जांपल home.html, और सर्वर पे home.html होना चाहिए फाइल, ठीक है, तो उस कंडीशन में home.html खुलेगी, फिर index.html नहीं खुलेगी, ठीक है। आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है वो डिफॉल्ट पेज अक्सर सर्वर्स के लिए index.html होता है, ठीक है। ये सर्वर्स में सेटिंग करनी पड़ती है ऐसी कि इन नाम के पेज पे अगर डिफॉल्ट आपको भेजना है, ठीक है। तो वो कंट्रोल गया उस रिसोर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने google.co.in करा है तो आपने सिर्फ सर्वर का नाम बताया और रिसोर्स का नाम नहीं बताया, रिसोर्स का नाम ऑटोमेटिकली index.html में ऐड हो गया, ठीक है। अब वो पेज खुला, उस पेज में एंट्री आपने करी, अपनी ईमेल आईडी करी, अपना पासवर्ड करा, सबमिट बटन प्रेस करा, ठीक है, या लॉगिन बटन जो भी हो आपने प्रेस करा। प्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज क्या दिखता है, इनबॉक्स का। दैट इनबॉक्स पेज इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। वो क्या करता है इनबॉक्स पेज, आपके डाटाबेस में जाएगा, आपकी लॉगिन जो आपने क्रेडेंशियल्स इनपुट किए हैं उस क्रेडेंशियल्स के हिसाब से, है ना। इनफैक्ट क्रेडेंशियल्स आपने जब इनपुट किए तो पहले क्रेडेंशियल्स आपके वेरीफाई भी होते हैं, यानी आपका यूजर नेम के अगेंस्ट पासवर्ड डाटाबेस से निकाल के चेक होता है कि जो पासवर्ड आपने एंटर किया है सेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वो ये नहीं बताता है, अमूमन जनरली ये नहीं बताता है कि वेदर यूजर नेम इज इनकरेक्ट और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इट विल जस्ट से आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, so that if you know in particular that whether username is incorrect or password is correct, then you will try to hack that particular field only, ठीक है। So it is making a little of suspense, okay, that either username may be incorrect or password, in general your credentials are wrong, ठीक है। अब वो कंट्रोल आया आपके सर्वर के पास, उसने डाटाबेस से आपके यूजर नेम के अगेंस्ट टेबल से यूजर नेम एज अ प्राइमरी की यूज की, है ना, विच इज योर ईमेल आईडी, उसके अगेंस्ट पासवर्ड निकाला, ठीक है, प्राइमरी की समझते हैं ना सब लोग, ठीक है। पासवर्ड निकाला, पासवर्ड निकाल के उसने मैच किया जो पासवर्ड आपने एंटर किया था, इफ इट इज सेम देन द कंट्रोल इज रीडायरेक्टेड इंटरनली टू द पार्ट ऑफ द कोड which is going to send back as a response the inbox page which is again HTML पेज। अगर आप इनबॉक्स पे जाके राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करें तो आपको HTML पेज ही दिखने वाला है अल्टीमेटली, है ना। सो दैट्स अगेन अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज। ना उसमें क्या हो रहा है, वो अब वो पेज जनरेट जो करने वाला जो कंपोनेंट होगा वो सर्वर साइड पे कोड लिखा हुआ है, मे बी आपने जावा में लिखा था वो कोड, ठीक है। वो क्या करेगा, इट विल अगेन look for your primary key, which is your mail ID. Authentication is already done. So it doesn't have to worry about the authentication, that whether you are the right user or not. It will just look for your primary key, which is your email ID. Okay. It will look for all the mails titles in the database, their stamps, and the other information, whatever you see on the inbox page. And it's going to generate a table, a nice, well formatted table for you. And that table is written back dynamically. So that whole information, that whole HTML page, which contains the table information, right, and your mails, the subjects, their timestamp, and everything, okay. So that will be generated dynamically at the runtime, depending upon who is trying to check his inbox, who is trying to log in. Okay? The whole HTML is written dynamically in that case, right? Okay. So there is a static page like HTML login page, which is already written. The format is same for everyone. Everyone is going to see the same page. But the inbox page is different for each and every one. So login page, I will classify it into a static page. Okay? Unless and until there is some dynamic information like date and time stamp which is keep on changing. So that becomes the dynamic component of it. Otherwise, if it's a simple login page, then I will classify it to a static page. Okay? And the rest that you get, which keeps changing as per the user, that's a dynamic page. So we have a static page and we have dynamic pages. Okay? So the website typically consists only of static pages.
That was the first concept of a website was given in such a way that you only can think about static pages. The pages are linked, they are hyperlinked. ठीक है? You can navigate from one page to the other page. That's perfectly fine. But they are only static pages. You don't have a benefit of having something being done on the server side dynamically. Okay? So this was just an example that a different person logs in, then he gets a different inbox dynamically. Now, if the same person logs in at a different time, maybe his new mails have arrived, so his table of mails is again going to change. So that means for each person, the dynamic page may behave differently. Even for the same person also, the dynamic page may behave differently over different time. Okay? And depending upon your location also, this dynamic behavior may change. These are some of the examples how dynamic behavior change. For example, if you try to Google, say Citibank, Citibank, just Citibank. Okay? So if you are trying to Google from India, it will show you citibank.co.in, right? Otherwise, if you are from UK, maybe it may show you citibank.co.uk. ठीक है? अमेजन आप करते हैं, अगर इंटरनेशनल परचेज आपको करना है, यू हैव टू गो फॉर सिटी amazon.com. Otherwise, if you are trying to browse Google, whatever the response you are getting from the Google, that is again a HTML page, right? Google करने के बाद उसको व्यू सोर्स करिए, HTML दिखेगा ना आपको. So that's again a HTML page. Now that HTML page may return the responses, ठीक है, depending upon what is your user location, location of the client, location of the client, ठीक है. So that may also impact the dynamic behavior of the response. ठीक है, बात समझ में आ रही है? So web application is consist of static pages plus dynamic responses or dynamic pages. ठीक है? Now the part which deals with dynamic response, that comes under server side technology. ठीक है? ठीक है? Rather, let me rephrase it. The part which deals with only the dynamic part of the page is something what is under the ambit of server side technology. There could be some static information also, okay? But something which is dealing with the dynamic part of the response of the page, that is something which you have to talk about the server side technology in that case. Okay? So one of the basic server side technology for your information is in Java, for example, because I teach Java, is servlet and JSPs. And again, this is ABCD. Normally, you are going to use framework in Java like Spring, and there are lots of frameworks. Okay? They are made on top of it. But ultimately, you need to understand the core concepts also, because someday you will be stuck somewhere and then you have to fix the thing. ठीक है? तो basic concept से important होता है हमेशा. Similarly, in .NET framework, you have got the ASP pages. ASP pages. ठीक है? So this is about server side. And when we talk purely about static pages, so the static pages which are pure static pages, which doesn't contain anything about dynamic behavior. So that will use the client side technologies. Client side. ठीक है? And it may at the ABC level, it may use HTML, it may use CSS, it may use your JavaScript. अच्छा, मजेदार बात यह है कि when we say JavaScript, it has nothing to do with Java. ठीक है? If someone asks you in the interview what is the relationship between JavaScript and Java, then you say there is no relationship between Java and JavaScript. So how does JavaScript got the name JavaScript?
made in web application development for scalability purpose, ठीक है, and portability requirements was done by Java, ठीक है. Now because Java has picked up the market and it started to be known as one of the fundamental technology stack for the development of dynamic web applications which are portable across the platform. Okay? So when JavaScript was introduced, there was no other competitor in the market for the server technologies, right? So it was just to flourish on existing, you know, theme of Java. They name it JavaScript, but later on, it started to be used in different technology stacks. It's not. It's only. It's not like that. It's only for Java. ठीक है. टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक चीज है ये. ठीक है. नाम इसको मिल गया बिकॉज ऑफ सम मार्केटिंग रीजंस. अदरवाइज जावा से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है. ज्यादा क्लियर है. स्टिल वी कॉल एवरीथिंग एज वेबसाइट. चाहे आप वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो. यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ह्यूज द अमेजन वेब एप्लीकेशन इज. है ना. कितने सारे सर्वर्स होंगे उसके. कितना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा अक्रॉस द ग्लोब. है ना. उनके डाटा सेंटर ही कितने ज्यादा होंगे. दैट्स अ ह्यूज humongous information it is going to store, right? But we have a habit of saying website. Okay? Otherwise, it's a full-fledged application. It's a web application, right? Now, when we talk about this client-side technologies and server-side technologies, let's try to understand the something what we call as request and response model. Request and things are very simple. Our subject is very simple. Just you have to keep on listening, and things will be very simple for you. Now, how does it work? You open your computer, right? You open a browser. This is symbol for Edge. ठीक है. आप Chrome और Firefox कोई भी ओपन कर ले ब्राउजर. ब्राउजर में एक सबसे ऊपर एक एड्रेस बार होता है यहाँ पर, जिसमें यू टाइप द यूआरएल. यूआरएल इज व्हाट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर व्हिच इज गोइंग टू लोकेट not only the server but the resource also for you. ठीक है. Now you type that and press enter key. Then remotely somewhere across the globe there is a server machine. ठीक है. The server machine could come from different infrastructure. One is that, uh, say for example, when you have got big brands like Amazon, they have got a group of servers. I mean, I don't know how many rooms or halls they will take, and maybe some blade servers which are put in the rack, one stacked over the other. Okay, and that all together are put to work. Okay, as of now we are considering it a machine, a hardware machine. So one is a server machine. Okay. Now on the server machine there is something installed which is a piece of a software, and that is called as a server software. ठीक है. सर्वर सॉफ्टवेयर होता है. तो सर्वर मशीन इज जस्ट like a computer. It's a computer in fact. ठीक है. But with a very high configuration. ठीक है. And that too not just one. There could be a group of systems which are clustered across and distributed. ठीक है. Either this could be the server machine, or maybe if you have a small business, you can you can create your server machine instance. I'm saying your server machine instance on a cloud.
ठीक है. That means similarly, like Amazon has already got an infrastructure, a huge infrastructure, right? For their own purpose they have developed. But now they have such infrastructure that not only is useful for them, but they can also sell that infrastructure. That means the physical hardware. Okay? So what they do is, if they have got a machine of this size, okay, say a machine of this size, and you are opening a business that requires a small application to be deployed. Deployed means put to work, put on the server, so that it should start responding. So these are the terms that I will be using, and these terms are typically used in industry. You will be familiar with it. ठीक है, इनको सुनने के धीरे धीरे आप आदि बन जाएंगे. ठीक है. So when the application is deployed, that means put to work on the server, then your requirement might not be such a huge machine. You might only require a machine with a small capacity for memory, for CPU cycles, and all that. So what they do is they use the concept called virtualization. Okay, they will pick a part of the resource of the same machine. Okay, use some virtual machine software. They will make an instance for you, which will just act as a standalone machine inside that large machine with the operating system choice, with the operating system of your choice. Okay, and they are going to allocate to you as a server. Okay, then you will put or install a software server, as I said here. Okay, so the hardware can come from two places. Either you hold your own infrastructure, you have a server centers, okay, or you may rent it from a cloud. If you own it on your own, the first cost or the initial investment is too high. When you rent, the initial investment is low and is as per use basis. ऐसा होता है, right? जितना आपको यूज करना है उतना कर सकते हैं. बट एनीवे यू कैन प्रोक्योर द सर्वर मशीन. ठीक है. Then you have to install a server software. Normally, what we teach for the academic purpose, and in fact, industry also it is being used, is one of the server which is called as a Tomcat. Anyone heard the name Tomcat? Tomcat. Okay. So it comes from Apache. ठीक है. Apache is a group. ठीक है. Which has done very good work in open source uh, world, and it comes from Apache. So when we say open source, what does we mean by open source? Anyone can access what? No. एक चीज होती है free. There are two concepts. One is you're talking about free, open, that anyone can get the software, install the software, use the software for free. ठीक है. ठीक है. और एक होती है not just free but it is open source. ओपन सोर्स देखो टर्म पे ध्यान दो. क्या ये कह क्या रहा है? ओपन सोर्स आप सोचो एक बार. The source code. That means when you say a software is open source, that means not only just it is free to use, you also have some place where they have hosted the source code to be downloaded, and you can further study it and make changes to it. You can even resell it depending upon the licensing terms and conditions. So there are different kinds of license in open source, uh, and depending upon if the license permits you, then you can even sell it. ठीक है. So open source software is a kind of a contribution that people make for for the good of the world. ठीक है. So Apache is organization. You can just look at apache.org. So that's why they have got org, right? So they basically what they do is they build a lot of softwares which are free, and not only just free but are open source. Tomcat is one of the servers. Now servers have got a lot of categories. Sometimes you call it a web server, sometimes you call it a container, sometimes you call it application server. So we are not getting into that depth, okay, as of now, because we are not talking about the server side technology. But you have to understand that there is a server in big picture,
which is going to respond to the request that this client. I'm not talking about the client machine. I'm talking about the browser. And the browser is client. The client is what? It's a browser. So you have requested for a resource in the form of a URL. This information is translated, comes to the machine. The machine is a hardware machine that holds a piece of software. Say for example Tomcat, which is a software server, and this software server contains your application. It could be a static website or a dynamic web application. It can serve both. Okay? Now, why I am saying this? This machine is not the client, but your browser is the client. I'm saying this browser machine, Edge or Chrome or Firefox, okay, or Internet Explorer, these are the clients, not this piece of machine. This hardware is not the client. Why? नहीं, वो तो ठीक है. Browser is something which is okay. One reason that he said is okay. The imposter is basically the browser because it is working on your behalf. Still, there is another reason. अलग अलग क्लाइंट में तो अलग अलग ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं. What he says is we can have a number of browsers, and if the request for the same URL goes from different browsers, they will be treated as they are coming from different clients. Example: if you say gmail.com and you have already opened Gmail on your Chrome, for example, then it will not take you to the login page. It will directly take you to the inbox because your login information is somewhere saved in your file system, and the format they are saved in is called as cookies. Okay? There is a small bit of textual information. Okay? Just for your knowledge. That is saved by the Chrome, and Chrome knows where it has saved. Okay? So the Chrome recognizes that this is the person, the server information go to the server. Okay? Now, if you try to open the same Gmail in the Edge and you have never opened Gmail before, what will happen? It will take you to the Gmail page, inbox, not inbox, that login page. Okay? Another example: you have you use your Edge browser to open your Gmail account, है ना? And you use say for example, let me make it simpler. I've got a mail account of my own, say shaimranadam@gmail.com. I have got a mail account of Jamia Hamza. Shaimranadam at jamiahamza.ac.in. Same name, I'm using the same name, but the domain changes, right? Now, if I am habitual of using uh, Chrome for my jamiahamza.ac.in, okay, that instance of Chrome, and I'm habitually using Edge for my personal login, that is shaimranadam@gmail.com. Then, even though the computer is same, the laptop is same, but that laptop is not being recognized. It's the client, that is the browser, which is coming into the picture. Okay, so the server is treating this browser as your client. Okay? And for client, this machine, physical machine, is immaterial. Rather, it is the server software which holds your application, and that server software is responding back. Getting the point? ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है? When you request for a resource, the resource could be a HTML page. ठीक है. Sometime you get into a site which returns you back with the audio video. ठीक है. It could be an audio and video, or say you are trying to get the admission in Jamia Hamza, then you have clicked the link, and the link, by clicking the link, the URL changes, and in the end of the URL you can see browser.pdf. So that PDF is again a resource. So it could be a resource. In fact, everything is resource like PDF. I'm trying to distinguish a little bit.
like PDF file or Word or Excel file or something like that, image. ठीक है, ठीक है. So all these comes under resource. So URL has got two things basically in broad classification. One is the name of the computer, jamiahamza.ac.in, and this name of the computer is uniquely mapped to an IP address. Okay? That is, no one in the world will have the same name to be used for their server. Okay? Because that is mapped to some unique IP address in the number format. Okay? Now, how this name is converted? When you type the URL and press the enter key, the information goes to a DNS server, which is outside the picture of this box. Okay? Now, this domain name server, that means you are giving the domain name jamihamza.ac.in. This, along with its network of sub servers, it's somehow going to resolve it to the IP address and set the control to that particular machine, which is bind to that IP address. I'm using the term which is bind to that IP address. Now, this machine is bind to IP address, which will be translated to jamiahamdad.ac.in. Now, the question is, if we have got the machine bind with jamiahamdad.ac.in, so is it possible to have multiple softwares which are server software? Yes, you can have them. Okay? But how they listen to the request is they have a system of ports. That means there will be some logical number which we call as port. So, for example, for Apache, the default port is 8080, 8080. Okay? For some other servers, there could be a different port. Even for your you use MySQL database. MySQL में आपने कभी कनेक्ट करके देखा है? आप जब देते हैं उसमें उसका कनेक्शन इंफॉर्मेशन जब आप उसे फिल करते हैं, उसमें एक पोर्ट नंबर होता है, राइट? So that port number is something, a number, a logical number on which MySQL is listening for the request from the client, MySQL client, or from the command prompt client that you are sending to fetch some information from the table or the queries that you are sending, right? So these are the logical numbers on which the server may listen. Now, what happens or what is the reason that when we type कब तक क्लास है हमारी? तो ओवर हो चुकी है क्या? Okay. So just let me finish it. So when we say that we just say gmail.com, did we say any port number 80.80 or something like that? We didn't mention. So normally what happens is just like index.html is treated as a default page when we do not give the page the default page that is configured in the server. Similarly in internet, ठीक है? The protocols which handle the internet or which are used to communicate through internet, the default port is 80. If you do not give any port number, then by default it will be considered as 80. It will not be shown on the URL, but the request will land on the port 80. And then on the server, you have to change 8080 to 80 so that whenever the information is coming as a default, it should pick it from there. तो आपने क्या किया सर्वर का लिसनिंग एड्रेस ही चेंज कर दिया. ठीक है, एक्चुअली ये होता है. ठीक है. So when you send the information, this information is called as a request, and the server, when it returns back the information, either it's HTML or any other resources, that is called as a response. And this one cycle is called as a single request and response cycle. Okay? Now, our worry will be not on this part of the picture, but rather on this part of the picture, the client side in our subject. But at least you should be aware of where your thing fits. ठीक है? तो रोकते हैं यहाँ पर, ठीक है?